Hi, this is KK. Hi, मैं हूँ पंकज त्रिपाठी. Hi, this is Jimmy Shergill. Please download the Bollywood Times app right now. If there's one thing my next guest, especially, of course, Pankaj Tripathi I'm talking about, and the great Sharon Stone have taught us, I'm talking about films Basic Instinct and Phamous, the current one, is never bring emotions while you have sex. My other two guests also join us today to discuss that further, is KK and Jimmy Shergill. Hello, welcome to Bollywood Times. Thank you so much. Sir, आपने Basic Instinct देखी है? नहीं देखी. तो फिर ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं है. I'm sure my next two guests have seen that. Yeah. We have, yeah. Is that the right question to ask? He believes in emotions all through. Yeah, I think he believes in emotion. खाते पीते इमोशनल आदमी भी हूँ मैं. हाँ हर चीज में. आपने कभी डायरेक्टर साहब को बोला ये सीन जरूरी था ट्रेलर में डालना? नहीं, मैंने नहीं बोला. पूछा ही नहीं. नहीं पूछा ही नहीं. हम काम करके भूल जाते हैं. काम करके भूल गया क्या हुआ, कौन डाला, कौन नहीं डाला. पर उनको अच्छा लगा होगा, ऑफ कोर्स, तभी डाले होंगे. Interesting. You know, this actually looks like if Quentin Tarantino has visited Chambal because there are so many bloody gunshots in one trailer. Like, you can actually literally count it. Okay. My first question to all three of you would be: you've worked with debutant directors in your careers, but how is trust an important factor when you work with someone who's never directed a feature film? Well, I think before you go ahead with the trust, I think the most important thing that comes in the way is the script that the person hands over. You read that and then you decide how you want to go ahead with it. So if the script given to you is rocking, then the worst thing you say to yourself is isko kitna koi bigaad lega yaar. You've worked on so many diverse genres in your career. Do you really like this milieu, this setting, the small town, the craziness? In fact, Chambal was what attracted me the most. I've never been to that place. Only I've heard of the place. And it's a fascinating place. It's a fascinating place, not in the normal colloquial sense, not a tourism colloquial sense, but it's fascinating in terms of its ethos. The way that place is gives you a sense of dense history and history of all kinds, good, bad, ugly, everything. And that is something which really fascinated me. As Pankaj was saying in an earlier interview, there's a beautiful river there, and there's so many things over there which you feel, in the midst of so much of nature, you have had dacoits and you have had so many other people. It's just a very complex feeling which you have when you go there. So for me, this film also is unique in the sense that that place itself is also a protagonist of the film. So a character. Yeah. So it's not just that हमने वहाँ पे base कर दिया, खत्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं है. You will see that you are actually visiting Chambal, and hence the inhabitants of that place. That's just people like us. You know, all three of you are method actors. You just get into that role. You immerse yourselves in. When you say that Chambal is a character in itself, the place, would you be happy shooting with a director who would actually just dodge that place for something else and call it Chambal? No, that's the whole point. That's the whole point. Like the previous question you asked about trust, these are all factors of trust, because as he said, Jimmy said that there are two factors only. One is the script and the second is the person who's directing it. This is the most important thing. The moment you have met the person and you read the script and you know that his wavelength is absolutely good in terms of doing the film, then trust automatically develops. Okay. It just starts pouring in, and then we have actors, collaborating together for making this movie. People who have mastered in whatever they're doing. So it all falls in place after that. Let me ask all three of you. Pankaj ji, आपसे शुरुआत करेंगे. What is the one thing that you really think your director Karan can improve on? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ नहीं, क्योंकि फिल्म मेकिंग बड़ा ऑर्गेनिक काम है. कोई मास्टर नहीं है, कोई मुकम्मल नहीं है. आप देखेंगे लीजेंड लोग, मास्टर क्राफ्टमैन फिल्म मेकर की दूसरी या तीसरी फिल्म बहुत वाहियात निकल सकती है, हमारे यहाँ भी, बाहर भी. तो ये आर्ट बहुत ऑर्गेनिक काम है, इसमें कोई कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है. हर किसी को सीखने की ज़रूरत है, करण को भी, हमें भी. Nice. What about you? Absolutely. I mean, I don't think you bring in your experience to do something, but that doesn't mean that experience is complete. You are still going to do a lot of things which you could learn from. So it's essential that you keep that balance while working, that you know something, yet you don't know certain things. And that's what life is all about, I think, more than filmmaking. Jimmy? I think it's Karan's first film, and I think he's achieved in this one what he set out to achieve. Nice. What was there in his mind,
this is the way he wants to say this story. A good story, but he wants to say it in a very different manner. And I think he has achieved what he set out to achieve. But yes, it's still his first film, so I want to see what he makes next. The fact still remains is that we were not forced to see a report card after Karan's work, because very nice. that itself is a qualification, because we never thought that he has lacked anywhere. When you ask this question, that's why he took some time, because we never thought in that direction. That happens only when you feel something is lacking. So our thought didn't ever go into that direction at all. तो जो आपके नाम विकिपीडिया में डालते हैं हम, और इतनी सारी, मतलब you have to scroll down, भाई खत्म हो जाए यार पिक्चर, और कितनी करेगा तू? Is there a bucket list for actors that this is what I mean, after doing so many films, you know what I'm saying? Like, what is a bucket list? No, it's like any other sportsman. I mean, आप अगर कहो किसी से कि आपने यार 50 सेंचुरी मार लिए, 100 मारेंगे, तो बोलेगा नहीं और मारना है भाई, हम क्यों रुके यहाँ पे? तो वही बात है, that never ends. At the same time, it's not just a desire, it's also the fact that we enjoy the whole process. Okay, let's begin. You shot in the Valley, KK. Yes. And now Chambal. Yes. Your fascination with terrorism, Maoists. No, I think it's the place more than anything else. Is it risky to shoot in places that are not inhabited with crew, film crew? Yeah, it was a difficult shoot in that sense, because as Pankaj was saying earlier, to approach that place itself was quite difficult. Plus, you have fantastic mustached people over there who have got tremendous mustaches over there. So yeah, they look dangerous, but I think they are got a very soft heart. But yeah, but they're very strange and very likable people. आप तीन जब कैरेक्टर को अप्रोच करते हो, जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, and when you read your particular character, what is the first thing? आप पहली चीज क्या करते हो? पढ़ते हैं ठीक से। नहीं, उसके बाद what is your first approach to a character after you know that this is the character that you are going to play? डायरेक्टर को कॉल करते हैं जो डायरेक्ट करने वाला है, फिर उसके साथ डिस्कशन चलता है कि कैसे देख रहे हो, अब फिर स्क्रिप्ट राइटर दिमाग में क्या है। क्या आप सजेशंस देते हो कभी? सजेशंस तो खैर, हाँ, कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म, सो सजेशंस तो हर एक से आए। So what's the most interesting trait of your character? What is your trait? क्योंकि जैकी था तो आके ट्रेलर में डायरेक्ट एक ही हाथ से बड़ा वाला बंदूक ढका। I don't know if that's actually his style or is that how people also shoot. लेकिन आप इंट्रिकेट डिटेल में जाते हो ऐसी फिल्मों में, जैसे कि होल्ड अ राइफल और प्रॉब्ली लुक अपार्ट, जैसे योर लुक इज वेरी 80s का, यू नो, लाइक अ वेरी, हाँ, वो सब डिटेल आई थिंक कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट के अंदर राइटर ने और डायरेक्टर ने इस तरीके से डाल रखे थे कि इतना ज़्यादा हम लोग को वो करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जब डिस्कशन हुआ तो वो क्लियर था कि भाई इसके कपड़े जो हैं ये ऐसे होंगे। वन ऑफ दोज गाइज हु विल नॉट बी रियली थिंकिंग अबाउट वो, मतलब दर्जी ने जैसा बना के दे दिया उसको, वो वैसा वाला है कि वो वैसे पहन लेगा। वेर एज समबडी लाइक KK sir's character would be something which is like his clothes, you will see that he is particular about the kind of stuff that he's wearing. You know what I mean? So वो difference जो है उस तरीके से एक रखा हुआ है फिल्म के अंदर, जो अच्छी बात आपने करी कि आपको अगर ट्रेलर में ही उतनी चीज दिख गई तो बहुत बड़ी बात है। When was the first time in your career or probably in your life, is that the right question? When was the first time आपकी लाइफ में आपको पहली बार स्ट्राइक हुआ यार डूड आई एम फेमस यार? पंकज जी इसमें ज्यादा मत सोचना। नहीं सोचूंगा, नहीं, मैं अभी इसका आंसर दिया हूं थोड़ी देर पहले। दिल्ली में मैं पिछले महीने गया था एक किसी कॉन्क्लेव में, जहाँ एक सीनियर IAS महिला थी कोई मिनिस्ट्री की, तो मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं आया, 2-4 हज़ार बच्चे थे, बहुत सीटियां तालियां लंबे समय तक बजी। तो मुझसे बोली कि अरे मुझे नहीं पता था तुम इतने फेमस हो। तो मैंने उनको बोला मुझे भी नहीं पता था, आपके संग मुझे भी पता चला है। कोई ऐसा कुछ पैमाना तो है नहीं, फीवर तो है नहीं कि मुझे पता चल गया कि आ गई, आज बुखार आ गया, मेरे को वायरल हो गया, ये नहीं मालूम चलता है ठीक से। आपको कब पता चला था? During the time of Sarkar. After Sarkar, as I answered this before also, that before that I used to introduce myself as I'm KK, I'm an actor. After Sarkar, it became I'm KK. So the actor bit was assumed because once people had seen the film. And you? So I'm Jimmy. I've done matches. Was matches? क्योंकि matches में दाढ़ी और लंबे बाल थे, वो जब शेव कर दिया मैंने तो मुझे कोई नहीं पहचानता था, कोई किसी को पता नहीं होता था कि ये वही लड़का है जिसने matches में किया, तो मैं बोलता था Hi, I'm Jimmy, I have done matches. But you know, a turning point in your career, KK, Sarkar was that big turning point for you. Could have been matches, but I think the world knows you more as the Mohabbatein thing. पंकज जी, आपके करियर में वो टर्निंग पॉइंट वाली फिल्म कौन सी? वॉसेपुर, गैंग्स ऑफ वॉसेपुर। Yeah. वॉसेपुर, हाँ। हालांकि उसके बाद भी मुझे ज़्यादातर लोग किरदारों के नाम से जानते थे, सुल्तान,
कि वो सुल्तान ही बोलते हैं, Correct. जानते थे कि नाम क्या है। मुझे अभी भी बहुत लोग मेरा नाम नहीं जानते, मेरे किरदारों को जानते हैं, कह रहे उसमें बिट्टी का पप्पा बना था, उसमें ये बना था, ये तो मास्टर है। तो So that's a victory यार। मतलब वही आपको पसंद आता है कि लोग ऑडियंस आपके कैरेक्टर के नाम याद रखे कि आपके? एक्चुअली अगर कैरेक्टर का नाम याद रखे तो बेहतर है, लेकिन अगर वो एस्केप रूट है तो बैड है। जस्ट बिकॉज गूगल किसको करूँ मैं, बट इवन दो या व्हाई नॉट। सो या सम पीपल डोंट नो योर एग्जिस्टेंस, दैट आल्सो इज वन एस्पेक्ट। लाइक अभी भी लोग मिलते हैं कि आपको हमने कहीं देखा हुआ है, ये होता है। You know, did it trigger you that a genre like a crime comedy is a rare phenomena happening in Bollywood? Even though Gangs of Wasseypur, because I think Anurag has that penchant कि थोड़ा comedy, a bit of humor can be established, but this is a lot of humor in a crime story. Is that a USP, and you think that is a genre that India has least made? Yeah, I think all credit to Karan and Puneet for that. They have really done an excellent job in bringing out that kind of humor. It's a difficult job. It's not easy. I mean, it's you can go the other way around easily. So I think they've done a fine job in that. Interesting. Okay, we're gonna play another game, and this game we all have played. I think आपने भी खेली होगी. Charades. Dumb charades. Dumb charades. वही. Let's test their true acting skills in dumb charades. टीम बनानी पड़ेगी, मैं और पंकज जी, आप और जिमी। क्योंकि मैं कच्चा हूँ, मैं बहुत ज्यादा खेला नहीं हूँ। अरे आप तो खिलाड़ी हो यार, आप मतलब आप खेलोगे। चलो ठीक है, आप ही एक्टिंग करोगे, मैं कुछ हेल्प मदद कर दूंगा। ओके, सो हियर आर द रूल्स। टीवी शो है तो टीवी, सिंगिंग है तो माइक, एंड ऑफ कोर्स द फिल्म इज रोल। हाँ, इन्हें दो, निकाल के दूं एक। हाँ, नहीं आप पढ़े। अच्छा, इनको गेस करना है फिल्म का नाम। ओके। गाना है मतलब? हाँ, गाना है, गाना है ये। छोटा बच्चा, नन्हा, छोटा बच्चा, बचपन, बच जान के हमको ना समझाना रे, बच्ची, छोटी, बच्ची, बच्ची, बेब, यस, क्या बोले? बेबी, हाँ, बेबी। यस। अब तीसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड है। वो क्या Baby था bump. वो बेस वाला बेबी ला यस 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 यस, बेस। जो बेस पे तो भैया से गाना है ना, बहुत बेस पसंद है। सर आप बहुत सुनते हैं ऐसे गाने। रेडियो में बजता रहता है। योर टर्न। अभी हमको गेस करना है। सर एक बार में या गए। चलो ठीक है, पहले तो ये बता दें कि ये फिल्म है। यस, ठीक है, और इसका एक वर्ड है। एक ही वर्ड है। ओ तेरी, चश्मा, रावण। रावण। ओह, कितना अच्छे से बता है। बहुत आपका सर वाह, अच्छा गाना है ये, है ना? हाँ। दो शब्द, दो शब्द। नहीं। दिल, हाँ यही था। 5 है। अच्छा, 5 शब्द। हाँ, 5 है जिसकी शुरुआत 2 से है। दो, पहला सेकंड शब्द वर्ड दो है। इज दो, दिल। दिल, दिल इज द सेकंड वर्ड। हाँ, दिल सेकंड वर्ड। पहला Now word, the पहला फर्स्ट वर्ड वर्ड। दो दिल, दो मिल रहे दिल हैं। मिल गए हैं वर्ड। हाँ, दो दिल मिल रहे हैं। फिल्म है। अंग्रेजी लिखने के लिए क्या बोलेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ। अच्छा, क्या है ये? इंग्लिश, हिंदी? नहीं। इंग्लिश है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी, 2 शब्द हैं। 3 शब्द है, बीच वाला शब्द। सेकंड शब्द जो है, ओके, सेकंड वर्ड इज इंग्लिश वर्ड। गार्लैंड, मुझसे शादी वेड। कन्वर्ट्स बनो। कन्वर्ट्स बनो। क्या बात है। बहुत इजी है यार। अरे लवली। फिल्म है। एक्चुअली नो। हिंदी है। हिंदी और अच्छा, इंग्लिश। हिंदी है बट इंग्लिश शब्द है। हाँ, फिल्म हिंदी की है, नाम अंग्रेजी। कितने वर्ड्स हैं? एक ही है। वर्ड्स कितने? हाँ, 4। तो पहला वर्ड जो है, हाँ, यार ये अजीब आदमी है। सीधे जा रहे हैं, थोड़ा तरीका होता है। सॉरी। हाँ, अब दूध कहाँ है? ये भी क्यों ही है, दूध किधर है?
No, but you can't say. Oh, sorry. Dulhan दिया. Yes, yes. दुल्हन बच्चा, बच्चा हस्बैंड, बहुत आसपास. दुल्हन बीवी, मियाँ, फैमिली, लवर, प्यार. प्यार, मोहब्बत. First word in Hindi, but it means English. But it's English. First word is English. Oh, love. feed, give, Total 4 words, huh? हाँ. milk. उस फिल्म में अब इतना बता दें कि आप थे, नहीं बताएं. Oh, sorry. Thanks. Thanks. Thank you, Pankaj. Life in a metro का तो नहीं ना? कौन सी पिक्चर में ड्राइव वाइव किए थे भैया आप? कहीं पहाड़ों में जा रहे हो ड्राइव करके, कोई बड़ी सी. Okay. अब उसको डिवाइड करते हाँ, हैं. उसको divide करते हैं. First word. First word. Break it in 2. सन, मून, Yes. चांद. हाँ, honeymoon travel. Sorry, मैं आपके कपड़े थोड़ा मतलब ऐसा कोई शो नहीं है, फैमिली शो. Yes, yes. Please guys, if you are watching, it's a family show. 5 words. फिल्म है 5 शब्द. हिंदी, मैं, मेरा, Sorry, you said it's a song, right? मेरा No. भाई, Oh, it's a movie. Okay, sorry. मूवी मेरा, मेरे ब्रदर, मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे दोस्त. साथी मेरा साथी नहीं, मेरे दोस्त, नहीं, मेरे तो is right. Okay. मेरे is right? मेरे अपने. वो भी ठीक है. नहीं, 4 वर्ड है. 5 वर्ड हैं. sorry. 5 वर्ड हैं जिसमें से First तुमने बोल दिया. फर्स्ट बोल दिया, सेकंड भी बता दिया. मेरे दोस्त. फोर्थ. 4th word. मेरे दोस्त शादी. मेरे दोस्त fill in the blank, शादी fill in the blanks. आज मेरे यार की शादी है. अच्छा, मेरे यार की शादी है. दोस्त यार. Well done. अच्छा, दोस्त is not the right word. हाँ, but okay, got it. So, ladies and gentlemen, you must have guessed who's a better actor over here on the table, on the panel. Pankaj ji, आप. thank you so much. Okay, I'm going to ask you before we quit the show. I'm going to ask, music has always played a vital role in Hindi films, right from 60s, probably even 50s. मुझे जानना है कि Famous में, okay, was the director or were you guys musically inclined also? Because such films have a tremendous scope for something as we always tag it as an item song. No item song. Good. No item song. We have got background songs, lots of them. Which is now the new trend. I don't know. It's relevant to the story, so we don't trend. We create the trend. और इसमें पॉसिबल भी नहीं था. मुझे लग रहा है कि इसमें अगर हम लोग लिप सिंक करके गाने वाने लग जाते वो पूरा फिल्म का फ्लेवर ही चला जाता. वो मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी थी इस फिल्म के अंदर. सो दैट्स द रीजन व्हाई द सॉन्ग्स आर देयर इन द बीजी, बिकॉज देन यू रियली फील दैट यू आर इन दैट प्लेस, seeing all this happen, because there is music playing in the background, whether it's some wedding happening over there, whether whatever, that feel comes only with the songs in the background. कभी ऐसा मोमेंट आएगा लाइफ में, करियर में पंकज जी के कि पंकज जी लिप सिंक करेंगे? क्यों नहीं? फोर्स आ सकता है, कर सकते हैं. योर फेवरेट सॉन्ग इज? किशोर साहब के बहुत सारे गाने, इवन अरिजीत का फिर ले आया दिल, जो भी बर्फी में थी, बहुत बढ़िया. वो सर के साथ ही पहली बार सुना था मैं. फिल्म सिटी में हम लोग बैठे थे, हमें लगा यार क्या कमाल गाना है ये. इंटरेस्टिंग. ओके, यू गोना टेल द ऑडियंस व्हाई दे शुड गो एंड वॉच फेमस. सबसे पहले तो अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो इमीडिएटली देख लीजिए. मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ट्रेलर देख के अपना मन ज़रूर बना लेंगे कि आप ये पिक्चर ज़रूर देखने जाएंगे. One thing is guaranteed, that this film is outstanding, and it comes from people who know what their metal is. So let's put it that way. And I'm aggressively saying this because more often than not you praise us for all that we do, but ultimately don't go and watch the movie. So I would like to request you this time that you please go and watch the movie, because this is a wonderful story told in a very unique manner, and it's got a flavor of jumble which I don't think you've ever seen before, and characters which you will never ever see after this. So you might as well take this chance and watch the movie and book your tickets in advance, because I'm sure this will go houseful. बड़ा इंटरेस्टिंग प्रीमाइस है. एक नई दुनिया क्रिएट की है हम सबों ने मिलके,
खूबसूरत लैंडस्केप है, चंबल है, चंबल की नदियाँ हैं, चंबल के किरदार हैं, तो उसके लिए देखिए। इतना चंबल हो गया है कि पहला स्क्रीनिंग, स्पेशल स्क्रीनिंग होगा शेखर कपूर जी के लिए। हाँ, उन्हें On that note, thank you so much Thank you. for gracing Bollywood Times. Thank you. Thanks, Thank buddy. you. Take care. Thanks. Bye.